यानी कौन सा नशा करते हैं ये लोग? Sakit Gokhale. He's a 20-year-old kid and apparently more popular in terms of natty or not request than most film industry actors and celebrities. YouTube पे इनकी over 650,000 subs की following है, जबकि Instagram पे he has a following of over 160,000. So pretty good following at an early age. So you ask for it and I am here to deliver. बेसलाइन पर्पस के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं इनकी वीडियो जिसका टाइटल है साकित गोखले 3-year नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन। हाउ ऑन अर्थ इज दिस 3 years ट्रांसफॉर्मेशन? इट शुड बी लेबल्ड एज चाइल्डहुड ट्रांसफॉर्मेशन। लास्ट वीडियो मैंने सौरभ पे कवर की थी और उस पर आई थिंक था 16 to 20 year old ट्रांसफॉर्मेशन, और स्टार्टिंग में एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू आ गया था। मेरा नाम साकेत गोखले है। मैं 19 साल का हूँ और मुझे लोगों को लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए इंस्पायर करना है। 3 साल पहले मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत की। बचपन से मैं बहुत पतला था। मैं एक लड़का था जिसमें कोई सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था और मुझे वो बदलना था। एक जिम मेंबरशिप लेना मेरी लाइफ का बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि ट्रेनिंग ने मुझे सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी बदल दिया। मुझ में कॉन्फिडेंस आया जिसकी खोज में मैं था और मुझे बहुत सारे नए दोस्त मिले। ट्रेनिंग चालू करने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। ये है मेरी कहानी। Took a swing at a wrecking ball and I prayed for my downfall and I found a way. So indeed Sakit used to be a scrawny tweak since the beginning, meaning someone who resembles of an ectomorph. Yani these are people who have a hard time packing on size, and he was, I believe, 16 years old. All you can do is play the game. Oh, do we say goodbye? Refuse to question why. I decided to say I'm sorry, so lie. Pretend that you're okay. Swear that you will stay. Keep trying for one day. And as usual, as he starts lifting, he gets what we generally refer to as newbie gains. यानी जब इंसान ट्रेनिंग स्टार्ट करता है तो जैसे ही उसकी बॉडी को एक ट्रेनिंग स्टिमुलस मिलता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग रैपिडली। और ये चीज आपको इनिशियल मंथ्स में देखने को बहुत मिलती है, स्पेशली व्हेन यू आर अ न्यूबी। हाउएवर जैसे ही आप एक्सपीरियंस लिफ्टर होते जाते हो, एज यू आर लाइक मूविंग ऑन, यू आर गेटिंग मोर एक्सपीरियंस, तो वो जो रेट होता है गेन्स का, जो कि लाइक इनिशियली बहुत फास्ट होता है, बहुत रैपिड होता है, वक्त के साथ साथ वो रेट कम होता रहता है। And apparently he starts bulking then, meaning he's gaining muscle and fat simultaneously. And then after a handful of years, the scrawny boy is gone and we have this kid who has kept delts looking pretty damn awesome from everywhere, and from the picture, he's in single digit body fat. And not only this, he is deadlifting pretty heavy, squatting pretty good, and this is coming out from a kid who used to be skinny some years ago. And now I am looking at 7-month deadlift transformation. So at 8 minutes to 10, he has made it to 500 pounds for one on deadlift. So by researching on Instagram, YouTube and his overall comments, here are Sakit's PR numbers for powerlifting. He has an all-time best of 390 pounds on squat, 245 pounds on bench, while 515 pounds on dead.
while having only 70 kgs of body weight, yani that is around 155 pounds. And to be honest, these numbers are pretty impressive, especially एक ऐसा लड़का who is just over 150 pounds. Because when you're like massive, very muscular, say someone who is like 180 or like 200 pounds, so more muscles equates more strength, more power. But these numbers for like a guy like Sakit who is just over 150 pounds is damn impressive. By the way, what is Sakit's height? Let's find out. Let's check his IG account. And here he says he is 5'7". And that is apparently a before and after post of 29 March 2021. And it says 1st October 2017 to 21st March 2021. Yani it is around a 3.5 years transformation. So, is this 3.5 years transformation natural or enhanced? मैंने जब natural और enhanced video series शुरू की थी, so I think I started from आमिर खान. आमिर खान ने लाइक 52 साल की उम्र में वो ट्रांसफॉर्मेशन करके दिखाई जो कि लाइक लोग जवानी में नहीं करते. इन लाइक फ्रिकिन मंथ्स ही वेंट फ्रॉम लाइक एन ओवरवेट पर्सन टू समवन who can like literally compete in a men's physique at an age of freaking 52, and yet people were saying he was natural. So I spotted him as a fake natty. कुछ टाइम बाद फिर मैंने कवर किया फरहान अख्तर को, and literally फरहान अख्तर was on a type of diet model. यानी उस बंदे ने लाइक 6 महीने तक उस बंदे ने कोई कार्ब्स नहीं खाए, ना चावल खाया, ना रोटी खाई, ना दलिया खाया, ना ब्रेड खाई, बट येट ही वॉज एबल टू पैक ऑन over 15 pounds of muscle in 6 months. और कैसे? He was doing like 6 hours of freaking training, but yet he was natural. So I spotted him as fake natty. And then I covered John Abraham. He was like fitness freak since day one. उसने like after years of training, कौन सी मूवी थी? Force. He packed on like 15 to 20 pounds of muscle in just 7 freaking months. इनफैक्ट कितने ऐसे शॉर्ट्स हैं, कितने ऐसे शॉर्ट्स मैंने रखे हुए थे वेयर लाइक यू कैन लिटरली सी गाइनो ऑन हिज चेस्ट एंड ही वाज लाइक गेटिंग बेटर मूवी आफ्टर मूवी, बट येट ही वाज नेचुरल. व्हाई? बिकॉज ही वाज वेगन. व्हाई? बिकॉज ही यूज्ड टू वेक अप लाइक 4 AM in the morning. सो आई स्पॉटेड हिम एज फेक नेडी एज वेल. ये जितने भी सारे के सारे सेलिब्रिटीज हैं, आफ्टर लाइक ईयर्स ऑफ ट्रेनिंग उन्होंने मैसिव ट्रांसफॉर्मेशंस करी. तो एक वो तबका, एक वो ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि सोचता है कि ये नेचुरल है. फिर दूसरी तरफ एक वो लॉट है लोगों की जिन्हें लगता है लाइक इवन साकित्स ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट नेचुरल. एंड लिटरली व्हाइल आई वाज वाचिंग दिस 3-year ट्रांसफॉर्मेशन वीडियो ऑफ साकित गोखले, आई वाज थिंकिंग लाइक व्हाट ऑन अर्थ आर पीपल स्मोकिंग ऑन. यानी कौन सा नशा करते हैं ये लोग. साकित गोखले की पिछली 1 साल की प्रोग्रेस मैं अभी आपके सामने रख रहा हूं. दैट इज फ्रॉम April 2020 to April 2021. So this is from April 29, 2020. It's a physique update. Weight यहाँ पे इसने बताया 67.5 to 68.5 kgs at 5'7" height. यानी it is around 68 kgs, हम एवरेज ले लेते हैं. September 26, 2020. It's a before and after. Current weight 68 kgs. यानी 5 महीने में no change in weight. 16th October 2020. वेट कितना बताया? 67 kgs. November 19, 2020. Another physique update. And the weight is 67 kgs. यानी 7 महीनों में, that is from April to November 2020, no change in weight. उसके बाद April 2021, वेट कितना बताया गया? 70 kgs. यानी from April 2020 to April 2021. How much Sakit gained weight? Yeah, in fact, how much he packed on muscle? Just 4 pounds. So do you think anyone who is on something can only pack on like 4 pounds of muscle in the last 12 months? I mean, this is like basic common sense question. So I have no clue why people think this transformation is not natural. और हमें ये भी पता है कि Sakit is mostly, he tries to eat in maintenance. तो इवन अगर एक बंदा किसी भी चीज पे होगा, किसी भी लाइक एनाबॉलिक्स या स्टेरॉइड पे होगा, हमने तो ये भी देखा है कि लाइक जैसे ही आप लाइक कैलोरी डेफिसिट पे ही क्यों ना हो, यू टेंड टू गेन मसल, स्पेशली व्हेन यू आर ऑन समथिंग.
So if Sakit was something, so he, in my opinion, जरूरी नहीं आप इस चीज से agree करें, he had like packed on more than 4 pounds of muscle in the last 12 months. And I don't know why, but Sakit की ये जो 3-year transformation video है, I don't know, but मैं इसको like relate कर सकता हूँ with Jesse of Athlean X. अगर मैं जेसी और साकित को साइड बाय साइड कंपेयर करूं, so both are close to 155 pounds after training for over 3 years. In terms of body fat, Sakit is a bit leaner than Jesse. In fact, Sakit knows how to play around with camera angles, lighting, filters, Photoshop. Jesse को कोई accuse नहीं करता for steroid use, लेकिन साकित को लोग accuse करते हैं that he has used anabolic steroids. Why? Because Sakit is 5'7" and Jesse is 5'10". यानी it has more to do with the height to weight ratio. यानी जितना आपका height to weight ratio ज्यादा आएगा, यानी जितना like numerator बड़ा होगा, the less impressive you look. और जितना like height to weight ratio आपका कम आएगा, the more impressive you look. Like मैथ्स की क्लास चल रही है यहाँ पे. And ये दोनों चीजें उस वक्त हैं when you are in a leaner body fat zone. So I can like guarantee you if Sakit was like 6 foot or even 5'10", at the first instant he would have never looked that much impressive, and as a result लोग उस पे उंगलियां नहीं उठाते. So this is like a basic height to weight ratio thing. Another reason why people think कि Sakit is not natural is his body fat percentage. अगर आप साकित को like in perfect lighting देखो, like IG photos में देखो, he is close to like 8% body fat. लेकिन जब आप उनकी फुटेजेस या दूसरे शॉट्स देख रहे हो, ही इज लाइक क्लोज टू 10% बॉडी फैट. और लोग कहते हैं यस, ये जो स्किन सो कॉल्ड स्किन क्वालिटी है नेचुरली नहीं आ सकती. एक चीज आज अपने जहन में आप लोग बिठा लें, दुनिया का कोई स्टेरॉइड, कोई एनाबॉलिक्स आपको सिंगल डिजिट्स में लेके नहीं आ सकता अनलेस यू आर टेकिंग कंट्रोल ऑफ योर न्यूट्रिशन और योर फूड. यानी जब तक आप कैलोरी डेफिसिट पे नहीं होगे, you are never on earth going to be in single digits. यानी अगर आपको ये लग रहा है कि आप दुनिया का like सारा सामान यूज कर लोगे and you're not like taking care of calories, so आप apparently बड़े तो दिखोगे, you would look like very huge, very like massive, लेकिन you're not going to look ripped or shredded. उसके लिए आपको calories के साथ play करना पड़ेगा. Now I am watching his video, my return to powerlifting, full bench and push workout, and at 8 minutes to 10, this is a Q&A question. एक और क्वेश्चन फ्रॉम नमन गुप्ता. इज कटिंग फैट्स मोर इम्पोर्टेंट और कार्ब्स ड्यूरिंग अ कटिंग फेज? आप सबको एक चीज रियलाइज करनी पड़ेगी कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू कट, देयर इज ओनली वन थिंग दैट मैटर्स एंड दैट इज कटिंग कैलोरीज. अगर आप एक कैलोरी डेफिसिट में रहोगे, देन यू विल लूज फैट. इट्स एज सिंपल एज दैट. And now another video titling My Secrets to Staying Lean. 15,000 steps in, 5,000 more to go. I don't care if you're bulking or cutting, आपको कार्डियो करना ही पड़ेगा. 5 महीने पहले मैं कार्डियो को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता था, बट क्वारंटीन में जिम्स बंद होने की वजह से मुझे कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेस का फायदा समझ आया. थिंक अबाउट इट, जब मैं और नील 1 घंटे के लिए चलते हैं, वी बर्न अराउंड 300 to 400 कैलोरीज. सो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स हम हर रोज थोड़ा एक्स्ट्रा खा सकते हैं. एग्जैक्टली. फिटनेस इज नॉट ओनली अबाउट आप बाहर से कितने मस्कुलर नजर आते हो, इट इज ऑल्सो अबाउट आप अंदर से कितने हेल्दी हो. To be honest, this 20-year-old kid is literally providing genuine information. क्या कहा है इसने? चाहे आप बल्क पे हो या कट पे हो, आपको कार्डियो करते रहना चाहिए. वेरी इंप्रेसिव. इनफैक्ट हमने ऐसे भी लोग देखे हैं, ऐसे भी इन्फ्लुएंसर्स देखे हैं, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, थोड़े टाइम पहले आप चले जाएं, वो ये कहते थे कि भाई आपको फैट लॉस पे कार्डियो की जरूरत नहीं है. या फिर वो वक्त भी हमने देखा है, इनफैक्ट अभी भी बहुत सारे सो कॉल्ड बिग इन्फ्लुएंसर्स ये बात करते हैं कि जब आप बल्किंग पे हैं तो आपको वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट यूज करना चाहिए, और जब आप कट पे हैं आपको वे आइसोलेट यूज करना चाहिए. तो एक वो तबका भी है. बट द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दिस 20-year-old kid is providing in terms of technicality is literally commendable. And by the way, this is not a Sakit Gokhale promotional video. ना मैं उनसे कभी इन पर्सन मिला हूं, ना मैंने कभी उनसे इससे पहले कांटेक्ट किया है. So, based on the information that he's providing on his channel, based on his training experience, based on the fact that he was still under puberty जब उनकी ये ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुई. प्यूबर्टी एक ऐसी चीज है जिसमें बहुत सारी चीजें आपकी बड़ी हो रही होती हैं, और you know the drill. Other than that, the height to weight ratio, his commands on like calorie deficit stuff, हमने देखा है कि he's always like tracking his calories pretty closely and I would say pretty accurately. I would say this is a complete natural transformation in my opinion.
I mean, there are like no freaking signs of any usage. And literally, I won't be surprised कि अगर साकित से कोई in person मिला हो सकता है उसने ये साकित के बारे में ऑब्जर्वेशन की हो कि वीडियोस में साकित लुक्स प्रीटी इंप्रेसिव, बट व्हेन यू मीट हिम इन पर्सन ही लुक्स लिटरली लाइक अ डायल। और रही बात पावर लिफ्टिंग की, तो कुछ टाइम पहले तक मुझे भी ये लगता था कि if he is able to lift that much amount of weight at such a freaking early age and especially इतने कम body weight पे, so why on earth is he not competing in a powerlifting meet? I mean, जब आप एक चीज में अच्छे होते हो, so of course आप उस चीज को आगे चल के टेस्ट करते हो, so why is he not competing? फिर कुछ दिन पहले he came up and he said कि I think he is taking part in nationals or something like that. आई लिटरली डोंट नो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर इनफैक्ट स्टेट लेवल पे कितनी स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती है, लेकिन आई लाइक अज्यूम के नेशनल्स में बहुत लाइक क्वालिटी और स्ट्रिक्ट टेस्टिंग होती होगी, आई अज्यूम। सो इफ साकित इज एबल टू represent or demonstrate the same PR numbers in a national powerlifting meet or any other powerlifting meet, especially which is like strictly drug tested, what else you want? That's it. And from my channel, I wish Saket Gokhale all the very best for his future prospect, just like studying, just like powerlifting, YouTube, bodybuilding, blah blah. If you find this video helpful, make sure you let me know by leaving a comment and a thumbs up below. See you guys.